Namaskar, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will look at the highlights of Thursday's proceedings in the Parliament. Let us first take a look at the headlines. Lok Sabha passes Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 by voice vote. Responding to the debate, Home Minister Amit Shah says ordinance absolutely democratic and for the welfare of citizens of Delhi. Aam Aadmi Party MP Sushil Kumar Rinku suspended from Lok Sabha for entire monsoon session. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi moves motion. Rajya Sabha passes the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill after debate. Press and Registration of Periodicals Bill 2023 and Advocates Amendment Bill 2023 also passed by the Upper House. The Lower House on Thursday discussed and passed the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Home Minister Amit Shah moved that the bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 be taken into consideration and be passed. Right in the beginning, the Home Minister clarified that the Parliament had full legislative competence to frame a law for Delhi. He also said that there is no violation of any Supreme Court order in bringing up the bill. Let us listen in. मान्यवर सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे कि ये विधेयक जो लेकर आए हैं वो ऐसे ही सदन चलाओ तो अच्छा लगता है। लाने का अधिकार नहीं है। संविधान के तहत संसद की कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठाए गए हैं और दूसरा ये मुद्दा उठाया गया कि विधेयक जो लेकर मैं इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं वो विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भावनाओं के विरुद्ध है। मान्यवर, सबसे पहले मैं यह दोनों चीजों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूं क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ विपक्ष का मूड सुनने का नहीं था, आज कुछ अच्छा भी मूड दिखता है। तो मान्यवर, जब तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, प्लीज माननीय मान्यवर, जहां तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के भाग 8 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत आता है। अनुच्छेद 239 से 242 तक इसकी कार्यरीति को संविधान में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 239 के ए में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली। क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए 239 ए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। इसकी डिटेल बात मैं बाद में बताऊंगा। अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विषय कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया। मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छेद 239 ए 3B की तरफ दिलाना चाहता हूं। 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत
इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए कुछ सदस्यों ने जिस बात को इंट्रोडक्शन के वक्त यहां उठाने का प्रयास किया था, मेरा दायित्व बनता है, उस वक्त माहौल ठीक नहीं था, तो आज इसका मैं ढंग से जवाब दूं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रखकर कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है। मैं वो सभी सदस्यों को विनती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। खैर, जिन्होंने नहीं रखा, मैं रख देता हूं। मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये विधेयक जो है इसमें सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष कर पैरा 164 ऐप की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को 239 AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर बहुत स्पष्ट कर दिया है। Other members cutting across party line took part in the discussion on the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Despite the expectation of the Home Minister, the debate on the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 took shape on party lines. Parties like the BJD, YSRCP supported the government, and members from Congress and other opposition parties opposed the bill. अधिकारियों के खिलाफ व्यवस्था चलाने के लोकतांत्रिक पद्धतियां होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को कहा जो हम कहें वो करो, वरना विधायकों को बुलाकर इस देश में एक एग्जाम्पल बता दो अध्यक्ष जी 38 राज्यों में कि चीफ सेक्रेटरी को अपने दफ्तर में बुलाकर विधायकों से सार्वजनिक रूप से पिटवाया जाए, उसके साथ बदतमीजी की गई, गुंडागर्दी की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता अध्यक्ष जी ऐसे अधिकारियों का। इसी परेशानी से होकर दिल्ली के 8 अफसरों ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी। अगर आप कहो तो मैं टेबल कर दूंगा या अफसरों के नाम भी ले सकता हूं, लेकिन कहते हैं अध्यक्ष जी सदन में नाम नहीं लेने चाहिए, सदस्य के तो सदस्य नहीं है। अधिकारी, 2 अधिकारियों ने तो जो सूरबीर और मधुबर बना है उनका तो नाम लेना चाहता हूं। उनके परिवार पंजाब में रहते हैं, उनको वहां टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है उन अधिकारियों के परिवारों को। We agree with you. A parliament is the utmost authority in making laws. That's the reason we are called lawmakers. But when any law is made here, you should make sure that we have the right to speak and right to say, if you are bringing a wrong law, we have to say you are bringing a law. Here, your intentions are very, very clear. Our intention is to control the Delhi government. Sir, why? Why is that? When you comes to you, you want your administrative to be extended, give extension. So one of your members spoke that none of the promises made by Aam Aadmi has been delivered. How can it be delivered? 69th Amendment of the Constitution has an important consequence for the special status of a Delhi as a national capital territory. Sir, it is emerges from the all speeches of the Dr. Ambedkar that Constitutional Assembly that India adopted a federal model in which the union and the states were meant to operate within their assigned legislative dormancy. These states are not subservient to the union. This is a unique bill, and hope this bill is not replicated for the other states. And with these words, we support the bills of YSR Congress Party supports this bill. दिल्ली में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि
केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली सरकार द्वारा तुरंत अधिकारियों के तबादले किए गए और आधी रात को कार्यालय खोले गए और भ्रष्टाचार से संबंधित फाइलें को नष्ट किया गया। अगर दिल्ली सरकार इतनी साफ सुथरी होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद तबादले नहीं करती और न ही आधी रात को कार्यालय खोलती। आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद रहा गर्मी की छुट्टी के लिए और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर रहे। आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में। The reason we support this is because we have studied the constitutional position of the power of this parliament to enact a law. 239AA of the Constitution gives this parliament certain exclusive and plenary jurisdiction to enact laws in regard to Delhi. यहाँ पर अपनी सब चीजों से हाथ जोड़कर कह देना कि भैया केंद्र की सरकार काम नहीं करने देना चाहती, हम तो करना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जैसे इससे पहले मेरे कई मित्रों ने कई सारे उदाहरण दिए हैं, मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगी, पर एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इनके पास 400 करोड़ रुपया नहीं है, तो कौन काम नहीं करने दे रहा? एक तरफ कहते हैं हमने इतने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, केंद्र सरकार के खड़े हुए कॉलेजेस और स्कूल्स वो केंद्र सरकार ने बना के दिए। 300, 500 करोड़ केंद्र सरकार ने लगाया, जाके अपनी फट्टी टांग के आ जाते हैं। Let me set out before the House the three dangerous prongs of this amendment, sir. It removes services from the legislative competence of the Delhi Legislative Assembly. In other words, it amends the Constitution without being a constituent assembly, a constitutional amendment bill. Second, it establishes this National Capital Civil Services Authority, consisting, as everyone has pointed out, of the Chief Minister, Chief Secretary, Principal Home Secretary. Now, the authority in which the elected CM can be outvoted by the other two can even convene on the basis of quorum of 2. So even without the CM, the two officials can get together and decide anything they like, sir. Home Minister Amit Shah replied to the debate, and the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 was passed by a voice vote. अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अंदर निहित स्वार्थनीतिक उद्देश्यों के कारण ना भाषण देने चाहिए, ना वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ। Before the House was adjourned for the day, Aam Aadmi Party's sole member Sushil Rinku was suspended for the remaining part of the session. This was announced by the Speaker. नेम करता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, रूल 374 में मैं ये रेजोल्यूशन मूव करता हूं कि सुशील कुमार रिंकू जो दुर्व्यवहार किया है वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है आसन के ऊपर उनको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए विलंबित किया जाए। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री सुशील कुमार रिंकू माननीय सदस्य को सदन के इस सत्र तक लिए बचे सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। The Digital Personal Data Protection Bill 2023 was on Thursday introduced in the Lok Sabha.
IT and Communications Minister Ashwini Vaishnav introduced the bill. The opposition parties opposed the introduction of the bill, and some of them demanded the bill be sent to the standing committee once again. I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto. This is a cumbersome bill and very different from the original bill which was sent to the standing committee. Under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Lok Sabha, I hereby rise to oppose the introduction of the bill. I oppose it on 3 counts. First of all, a bill which was considered by the Joint Parliamentary Committee came back to the House, was withdrawn by the government, reintroduced, cannot be introduced as a finance bill. Number 2, it's a bill which requires serious reconsideration by a Joint Parliamentary Committee for the simple reason that it is in complete contradiction to the fundamental right of privacy upheld by the Supreme Court in the Puttaswamy judgment. Number 3, this bill cleaves the entire digital universe into 2 parts. The bill will apply with full force to all non-governmental organizations, and the entire government universe is going to be exempt from it. Sir, as the former chairman of the Standing Committee, let me say that this is a matter that we have repeatedly requested the Minister to take the committee into confidence. It is a matter of disappointment that, to the best of my knowledge, the committee has not been asked to study this bill, which, as has been pointed out, has been repeatedly modified by the government and is brought in its 3rd iteration to this House in this condition. Given the vast number of objections you have heard, Mr. Chairman, I would urge that the bill be sent to the Standing Committee for proper examination. Legislative competence के बारे में किसी भी मान्यवर सदस्य ने प्रश्न नहीं उठाया है. जो प्रश्न उठाया है कि क्या ये फाइनेंस बिल है, क्या ये मनी बिल है या जनरल बिल है, मैं एकदम स्पष्ट तरीके से, मान्यवर मनीष तिवारी जी ने कहा था अभी, मैं स्पष्ट तरीके से सदन के सामने आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि ये एक जनरल बिल है, ये मनी बिल नहीं है. इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा. The lower house also witnessed the introduction of the Pharmacy Amendment Bill 2023. MOS Health and Family Welfare, Dr. Bharti Praveen Pawar, introduced the bill. I rise to move for leave to introduce the Pharmacy Amendment Bill. Time for a very short break in the bulletin. News from the upper house on the other side. क्या हुआ सदन में? किसने किए प्रश्न? किसने दिए उत्तर? किन विधेयकों पर बनी सहमति? किन मुद्दों पर हुई बहस? किन बातों पर लगे ठहाके? कई बार क्या होता है कि नजर कहीं और होती है, निशाना कहीं और होता है. किन बातों पर दिखी तलखी? संसद में किस तरीके की बात करते हैं? आधे घंटे में देखिए संसद के दोनों सदनों की दिन भर की कार्रवाई का पूरा हाल. सदन दिन भर रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर. Welcome back. When the Rajya Sabha met this morning, Chairman Jagdeep Dhankar disallowed the adjournment notices moved by the opposition members on Manipur and other issues. Discussion on Manipur is imperative, and in the heart of hearts, everyone wants it. Let me remind you, at the very first instance, I conceded to the notice under Rule 176, and the government very promptly agreed for a discussion. I had fixed, in consultation with the leader of Council of States, date and time. Supplementary list of business was drawn. I had indicated from this chair that 2.5 hour short duration discussion time limit will not apply. I had indicated to everyone that I will allocate as much time as all segments of the House need to avail for making an input. That opportunity
did not fructify. I do not wish to engage into blame game. We in this House have to set an example even for every theatre of legislature in the country. So, in a sense, I am happy that an honorable member of this House has focused on a very substantive aspect that we need to discuss, debate, engage into dialogue on Manipur. Leader of the House, Piyush Goyal, said Manipur is a sensitive issue and the government stands with the people of Manipur. He said the government is ready for discussion. Manipur has always been a very sensitive issue for all sections of this House. The government has been very proactive in its actions, and right from the day one, we have been requesting, the chair requesting all the honorable members, through you, sir, that we must have a wholesome debate on this subject. We must send out a message appealing for peace. We must, all of us collectively, work towards peace and stability and bring back that healing touch to Manipur. Government has taken every initiative possible on every occasion to appeal to all sections of the House to discuss this issue. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on Thursday asserted that he does not need to defend someone who has got global recognition and electoral mandates in 2014 and 2019. We must always be alive to a situation that we are a nation of more than 1.3 billion people. We are a democracy, most functional, vibrant, globally recognized. India is the only democratic nation in the world that has constitutional democracy at the village level, at Panchayat Samiti level, at Jila Parishad level, apart from state and there. If our Prime Minister is not required to be defended by me, he has come to be recognized on global platforms, Senate and Congress in the US. Imagine the kind of response. Every Indian should be proud. We must be proud of it. No, you cannot have an approach. Why are you shirking from the hard reality? India is rising as never before. The rise is unstoppable. It is on account of all of us. Everyone has contributed to it. Such a global recognition. I am not required to defend anyone. The Prime Minister, honorable members, after 3 decades of coalition governance under the leadership of the Prime Minister, you had 2014, you had 2019 electoral results. I am not required to defend anyone. If I am required to defend anyone, I am not required to defend right, I am not required to defend left, I am required to defend Constitution. I am required to defend your rights. Rajya Sabha on Thursday passed the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023. The new bill regulates mining in maritime zones of India. The bill was passed by the Lok Sabha on Tuesday. Replying to the debate on the bill, Coal and Mines Minister Prahlad Joshi said that the amendments would ensure more transparency in allocation of these critical minerals resources. Moreover, certain critical and sensitive minerals, including atomic minerals, would be allocated only to government entities or PSUs. इसमें जो है एटॉमिक मिनरल युक्त ब्लॉकों का ईएल और पीएल पीएसयू को दिया जाएगा. अगर एक्सप्लोरेशन करते करते अगर एटॉमिक मिनरल्स मिलता है तो भी देन दैट विल बी अगेन गो टू द पीएसयूज एंड इट विल नॉट बी विद द प्राइवेट पीपल. और इसमें ये भी कभी कभी क्या होता है, ये ऑनशोर माइनिंग में भी होता है और ऑफशोर माइनिंग में भी होता है. ब्लॉक्स
ऑक्शन में ले लेते हैं लेकिन बाद में काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर 4 बरस तक वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उनका जो लीज होल्डर का इनका हम लीज खत्म हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर प्रोडक्शन शुरू करके 2 बरस तक वो बंद रखते हैं तो भी उनका प्रोडक्शन बंद, उनका लीज कैंसिल हो जाएगा। Rajya Sabha on Thursday passed the Press and Registration of Periodicals Bill 2023. The bill has been passed through a voice vote. Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur said the bill is aimed to simplify the registration process of newspapers, magazines and periodicals. He said the registration process will be completed in the stipulated 60 days period. उस समय 8 ऐसे प्रोसेस का हिस्सा थे कि आपको 8 कदम 8 स्टेप्स थे जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता था। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको केवल डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया की बात जो आपने शुरू में कही, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, जो सिंपल भी है, स्मॉल भी है और साइमल्टेनियस भी है। और ये ऑनलाइन प्रक्रिया में 2 महीने के अंदर अगर डिप्टी कमिश्नर यानी कि कहाँ करनी, डिप्टी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके सामने और आरएनआई में ये ऑनलाइन करना है। अगर 60 दिन के अंदर डीएम ने जवाब नहीं दिया तो आरएनआई का यानी कि जो रजिस्ट्रार जनरल हमारा है, प्रेस रजिस्ट्रार है, वो अपनी मर्जी से उसके बाद उनको अनुमति दे सकता है। यानी कि जो 2-3 साल का समय था अब वो मात्र 2 महीने से 3 महीने तक का रह गया है। ये एक बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि है। The Rajya Sabha on Thursday passed the Advocates Amendment Bill 2023, which aims to regulate the legal profession by a single act and seeks to target touts. Replying to a debate on the bill in the Rajya Sabha, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal said the legal profession is a noble profession and unlawful practices should be dealt with firmly. नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो न्यायालय परिसर भी साफ सुथरा रहना चाहिए ना। हाँ, इसलिए लाएंगे। तो इसके मैं बैठे मैं कभी तो नहीं हूं आपकी तरह, लेकिन बैठे मैंने यहाँ लिखा न्यायालय का परिसर हो साफ सुथरा। रूपाला जी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। न्यायालय का परिसर हो साफ सुथरा। इस संशोधन से बिना दलाली के भी होगा काम पूरा। कोई जरूरत नहीं थी दलाल देने की। कोई राम जी अभी ठीक कह रहे थे, मैं एडवोकेट हूं। उनके लिए तो आईपीसी में प्रावधान है ना साहब, वो कोई हटाया थोड़ी हमने, वो रहेंगे ही। कि कोई गलत परिचय देकर के किसी को ठगता है, 420 करता है, वो प्रावधान आईपीसी में है ही, वो अपना आप रहेंगे, वो हटाया नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पटनायक साहब, वो रहेंगे। लेकिन ये जो टाउट्स वाला है, ये इसलिए जरूरी माना गया कि ऐसे लोग हैं जो वकील के पास चले जाते हैं कि साहब मैं कोई क्लाइंट ले आऊं क्या, क्लाइंट को कह देते हैं वकील मेरे जान पहचान का है, या आगे भी चल करके कह देते हैं जज भी मेरे जान पहचान का है? तो ये सब चीजें फिर साफ सुथरा कैसे होगा न्यायालय परिसर? जब स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा है तो न्यायालय परिसर भी साफ सुथरा होना चाहिए। इस उद्देश्य से हम इस बिल को लेकर के आपके समक्ष आए हैं। With this, we come to the end of the House highlights. For daily updates, keep watching Sansad TV. Good night.